your seatbelts are on, please. दोस्तों आज प्लान है बीच में जाने का। बीच इज़ वन ऑफ द स्पीड बोट यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी। ये रहा, दिस इज द बोट। बोट खाली और आप देख सकते हैं पूरी जो पब्लिक है दे ऑल आर वेटिंग फॉर दिस। तो सून बोर्डिंग करेंगे हम लोग। अभी वेट कर रहा हूँ मैं, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद वी शुड बी बोर्डिंग। बट आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं। ये पूरी जनता इसी के लिए वेट कर रही है बीच में जाने के लिए। दे से इट गोज़ वेरी फास्ट और ये एक ही बोट है। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, यू कैन सी बोर्डिंग इज स्टार्टेड नाउ। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बोट जो न्यूयॉर्क सिटी की स्पीड बोट है। आई थिंक पूरे यूएस में दिस इज़ द ओनली बोट हडसन रिवर पे जो चलती है। मैं बात करते रहूँगा। मालूम पड़ा कि मैं आखिरी में पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। आई डोंट वांट टू गेट लेट। तो ये जो बीच है ये न्यूयॉर्क सिटी के 11th एवेन्यू से निकलता है। इट्स ऑन पियर 83 42nd स्ट्रीट पे है ये। एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल न्यू बिल्डिंग कमिंग अप यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग्स हैं पूरे नए बिल्डिंग्स हैं 8th एवेन्यू पे, वेस्ट साइड पे ही है। बिकॉज वेस्ट साइड वॉजंट दैट फेमस, एक टाइम पे फेमस था इन द सेंस रेजिडेंशियल के लिए। So now they are trying to make it more residential. There are more high tower buildings आ रही हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा लेट हो गया, otherwise I wanted to sit in the front, but यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। You don't get the parking. That's a bigger problem यहाँ पे। तो I had to park on 39th Street पे and then भाग के आया तब तक। Because I wanted to get the front row. Front row में जो मज़ा आता है उसका effect आता है, it's totally different. You scan this right, miss? Okay, so I'm good to go, right? Thank you. So आप देख सकते हैं फ्रंट रो इज़ ऑलरेडी गॉन, मिडल रो इज़ ऑल्सो गॉन। तो देखते हैं हमें चांस पीछे मिलेगा। तो लास्ट वीक का प्लान था मेरा लेने का, बट लास्ट वीक नहीं ले पाया बिकॉज रेन था एंड रेन में टाइड्स गोज़ अप, सो दे कैंसिल द होल बीच का ट्रिप। एंड दिस द लास्ट बोट 6 o'clock। सो लास्ट वीक जो हमने लिया था वो 6 o'clock का लिया था एंड देन 6 o'clock गॉट कैंसल्ड, so I rescheduled it. So that's why it's all full now. दोस्तों फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है। I'm just waiting for the beach to start and इसमें पूरा सिटी है, बेल्ट लगा रखा है यहाँ पे। आई थिंक इट गोज़ इन रियल फास्ट। नीचे लाइफ जैकेट की यू कैन सी ऑल द लाइफ जैकेट। सो दोस्तों इट्स टेकिंग ऑफ सून।
दोस्तों हाफ एन आवर का राइड था लेकिन बहुत मज़ा आया। टोटली भीग गया मैं एकदम। I mean, you know, the way he was putting the brake and turns and twist, it was lot of fun. The video, do not forget to like and subscribe, comment भी कीजिए and then bell icon में भी click कीजिए. Until we meet, stay safe.